Do you have any doubts? Yes ma'am, I have doubt ma'am. Yeah, tell me what's your doubt. मैम ये इंटरनेट कैसे चलता है मैम? मतलब ये जो इंटरनेट है ये होता कहाँ पे है और ये चलता कैसे है? इंटरनेट कैसे चलता है? Okay. Internet, you either have your Wi-Fi, right, broadband Yes connection, ma'am. correct? Yes ma'am. And then you have your mobile data, Yes ma'am. correct? So Wi-Fi, I mean, you can use you have a big wire, right? A black color wire called as broadband. Yes ma'am. So for example, there will be a main office, okay, where Yes, they ma'am. will be supplying internet through this broadband. If you take a connection, Yes okay, ma'am. they will be supplying it Yes ma'am. through that. And mobile data is like, you would have seen there might be many mobile towers, right, everywhere around you. Yes ma'am. Mobile towers. Yes ma'am. So that is like an antenna, like how in older days when TV had an antenna for signal. Yes ma'am. So same way mobile towers, they will transmit the signals. मैम ये फाइल्स जो है ये क्लाउड में कैसे सेव होती है मैम? मतलब ये कहाँ पे होती है? Files cloud में क्यों सेव होती है? यस मैम. Because cloud is, what is a cloud? Cloud is something which is in open, in space, right, in open air, correct? यस मैम. So every time, like if you have a lot of data, too much data, okay, you will first try to save it in your laptop. Yes ma'am. Then if your laptop is also full, then you will try to save it in a pen drive. If your pen drive space is also full, then you will try to save it in a hard disk, correct? Yes, If your ma'am. hard disk is also full, then what can you do? You can only save it in air, in space, in cloud, right? Because you don't require any device. It is in air, in cloud. Ma'am, how can so many files be saved? Okay, so that's why we save it Yes, on ma'am. cloud. Ma'am, how can so many files be saved in cloud, ma'am? Sorry? How can so many files be saved in cloud? Cloud is like imaginary, okay? An imaginary space. Imaginary space. ये इमेजिनरी स्पेस क्या होता है मैम? मतलब क्या होता है इसका मतलब? Okay, it's an imaginary space. इसका मतलब क्या होता है मैम? Yeah. इमेजिनरी स्पेस का मतलब? Okay, now Lakshmi, click on rename button. यस मैम. क्लाउड में ही सेव होता है, वो इमेजिनरी स्पेस है. यू डोंट रिक्वायर एनी डिवाइस और यू डोंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू सेव इट इनसाइड दैट. मैम कहीं पे तो सेव होता होगा ना, हार्डवेयर में या फिर सैटेलाइट में, कहीं ना कहीं तो होता होगा. सैटेलाइट में ही होता होगा. नहीं, सैटेलाइट में नहीं होता है. तो कहाँ होता है मैम? ये सैटेलाइट में नहीं होता है तो कहाँ होता है? सैटेलाइट में नहीं होता है. इट विल हैपन ओनली इन द क्लाउड. क्लाउड इज नथिंग बट अ फ्री मूविंग थिंग अराउंड यू. Can you see the air around you? No, right? नो मैम. You cannot see the air around you, right? नो मैम. It is the same way. You cannot see the cloud around you. So you cannot see where the data is getting saved, but your data is saved safely. Okay, it's just like the air around you. मैम बट डाटा तो 0-1 होता है ना. हाँ. डाटा तो 0-1 होता है ना, तो ये कहीं ना कहीं तो सेव हो रहा होता है. सैटेलाइट में नहीं, हार्डवेयर में कहीं ना कहीं तो सेव होगा ना. ये हवा में कैसे हो सकता है? If you save it, it will save. Otherwise, you have to. Okay, now Lakshmi, we are almost at the end of the session. Okay, so can you click on rename quickly? Near untitled project, you have rename. यस मैम. क्लिक मैम. Delete the untitled project and give a name for your app. Any name, my first app or color changer app or anything, whatever you like. यस मैम. Save it. यस मैम. Now click on share. यस मैम. Now click on the link and copy it. यस मैम. Click on the link. Click on the link यस मैम. and copy it. Now close this. यस मैम. क्लोज मैम. Now go to WhiteHat Junior page. यस मैम. WhiteHat Junior page. Go back to WhiteHat Junior page. यस मैम. Now click on enter your project URL. यस मैम. Above activities, यस मैम. above activities you have. मैम ये डाटा गीला नहीं हो जाएगा अगर हम इसे क्लाउड में सेव करेंगे तो? No, it won't get spoiled. नहीं मैम, होना तो चाहिए ना. अगर क्लाउड में गीला. No. क्यों मैम, ये गीला नहीं हो जाएगा? No.
Yeah, So now ma'am, close the chat box. yes ma'am. Okay, now above activities, can you see a orange color box which says enter your project URL Yes on your ma'am. right side? Yes ma'am. Click on it, paste the code, मैम ये डाटा हवा में कैसे सेव हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैम. and click on submit. यस मैम, ये डाटा हवा में कैसे सेव हो रहा है मैम, मुझे समझ नहीं आ रहा, बताना. Okay. So now this has been, whatever app you created today, it has been sent to your parents' email ID or whatever email ID you have registered for WhiteHat. It will be sent there and you can download the app what you created and you can show it to your friends and your family. ओके मैम. Okay, now can you click on student activity 2 first? यस मैम. Sorry, student activity 3. यस मैम. मैम ये डाटा हवा में कैसे सेव हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब हवा में डाटा कैसे सेव हो सकता है. कहीं ना कहीं तो हो रहा होगा ना, सैटेलाइट में, हार्डवेयर में, कहाँ हो रहा है ये डाटा सेव. Lakshmi, I told you all these doubts which are not related to the class, I am running short for my next. Sorry? यस मैम. ये कहाँ पे सेव हो रहा है मैम ये डाटा. Abhi, I cannot tell you. I cannot answer the questions which are out of the topic. Okay, because I have to complete this topic. Okay, so can you please click on student activity 3 now? You can write down these यस मैम. questions and keep it. And in the next class, I will try to solve your questions. Okay. ओके मैम. Okay. So do you know what is a Google Play, right? यस मैम, इन दिस गेम्स एंड एप्स वी कैन डाउनलोड नो. Yeah. So all the apps and games what you're seeing over here, okay, they are the apps and games which are created by WhiteHat students and they have been published in the Google Play Store. So in future, if you come up with any idea that is very different, okay, and there is no app or game like that, then मैम ये गूगल प्ले स्टोर भी हवा में होता है मैम. ये हवा में होता है. ये टॉपिक हम बाद में बात करेंगे, ठीक है. मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको, हम बाद में बात करेंगे ये क्लाउड स्पेस क्या है. और मैम ये मेरा मेन हाँ हाँ मैम ये मेरा मेन क्वेश्चन है ना कि ये डाटा हवा में कैसे सेव होता है, तो मुझे जानना है इसका आंसर. ये मेन क्वेश्चन है, मुझे पता है, लेकिन अब ये क्लास के करिकुलम के बाहर हो रहा है, ठीक है. तो पहले क्लास खत्म होने दो, तो पहले क्लास खत्म करो, उसके बाद ये एडिशनल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाद में देख. And even you will be getting a call from one person after 30 minutes from my WhiteHat team. You can ask them these questions and they will also clarify it to you. Okay, but as a teacher, please try to understand. Okay, and I cannot resolve your questions which are out of the curriculum. Okay, so cloud space is not the topic for today. I hope you try to understand that. Okay, cloud space is not the topic and I'm going on repeating it. So let me complete my curriculum. Okay, Lakshmi? मैम मेरे पर्सनल डाउट भी तो इम्पोर्टेंट होंगे ना मैम, मुझे जानना है कि ये डाटा हवा में कैसे स्टोर हो सकता है. हवा में तो डाटा कैसे, मतलब इतना सारा डाटा कैसे स्टोर होएगा हवा में मैम. या आप भी समझना चाहिए ना कि टाइम वेस्ट नहीं करना है और ये सब एक्टिविटीज, ये WhiteHat क्यों है और क्या क्या हम पढ़ाते हैं. मैम आपका जो आंसर है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आँख बंद करके आपका आंसर कैसे एक्सेप्ट कर लूँ मैम, मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ. मैंने ऑलरेडी बोल दिया सिंपल लैंग्वेज में, और आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, यू कैन नॉट लर्न एवरीथिंग इन वन डे. ओके, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप. ओके, ऑल दीज व्हाट यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, दे आर मैम AI और ML भी तो एडवांस है मैम. Wait, don't talk when I'm talking. Okay, don't talk when I'm talking. Please wait till I complete. Okay, which class are you in, Lakshmi? 6th क्लास मैम. Which class are you? 6th क्लास. Yeah, so whenever your teacher is talking, do you interrupt her in between or do you let her complete? मैम आप भी तो मेरा क्वेश्चन काट रहे हो मैम. Is it a good habit? मैम मैं सवाल ही तो पूछ रही हूँ मैम कि क्या होता Yeah, है. सवाल पूछ रहे हो, but please first let me complete it and then you can move on to your next questions. Okay, so this is a trial class. In the trial class, you have a particular topic which needs to be completed, and whatever questions you're asking, okay, keep it with you because step by step we will be coming to each and everything. मैम मैं सिंपल सवाल ही तो पूछ रही हूँ कि डाटा हवा में कैसे क्या? स्टोर होता है. मैं सिंपल सवाल ही तो पूछ रही हूँ ना कि डाटा हवा में कैसे स्टोर होता है. मतलब हाउ इज इट पॉसिबल दैट these many files be saved in cloud, no? Yeah, it is called as cloud space. Okay, there is a company which owns it. Okay, and if they will be giving you some free data, say for example they give you 5 GB
free data, and once you have exhausted that or you have finished using that, then you have to pay money and buy it from the company. Okay, and as you said the data will not get destroyed and all. Okay, so to understand this, you are just in sixth standard, Lakshmi, so try to understand. You're just in sixth standard. Okay, मैम बट आपका learn. मैम आपका ऐड बोल रहा था कि हम 6 साल के बच्चे को भी एमएल सिखा देंगे. Can you turn on your camera, please? Can you turn on your camera, please? यस मैम. Can you stop sharing your screen? यस मैम. यस So this is मैम. wait. Let me complete the quest. Let me complete it. Okay. यस मैम. Okay, Lakshmi, who's there at home? Mom or dad? Who's there at home? नो वन इज़ देयर मैम. आई एम अलोन. Up. यस मैम. Yeah. So can you give me your mom or dad number, because I need to talk to them. Okay. Can you give me your parents' number, please? आपने शिकायत लगाओगे मैम. आप पहले नंबर दो. I want to give you some points for the class today, and only after that I will be telling you about this data. Okay? So please give me your contact number of your parents. मैम अगर बारिश होएगी तो डाटा टपकने नहीं लगेगा मैम. यस मैम.